technique. It will give you good health also. Many rogues is a good oxidant. Oxygen. Take oxygen inside, and your body blood will get purified, and you get to chant nicely, and you get it done also. अगर आप ये नहीं करोगे सारा दिन माला चलती रहेगी, है ना? तो 7 माला सबकी हो गई ना, तो टाइम सर हुई ना? हाँ, सबकी 7 माला हुई कि नहीं? टाइम सर बराबर पक्का है ना? It's a good technique. So I sit down. I try to sit down everywhere I go to. At least 1 hour. Yeah, it will come. But I'm saying that it will keep coming. Mataji will also bring this point because she has 1 hour today. So maybe she will go into depth of chanting. And ये भगवान को हम ये माला के रूप में ही प्राप्त करेंगे, है ना? नाम के रूप में ही प्राप्त करेंगे. तो गुड, योर ऑन. So 10 o'clock is प्रसाद वहाँ लेंगे हम, जहाँ कर लिया था उसके बाहर टेबल लगा लेंगे, और पार्किंग भी है. अगर नीचे बैठना है आपको तो आपकी खुद की गद्दी हो, कंबल हो, चादर हो, जो भी आपको के लिए मैंने नोट में लिखा था, कुछ लेके आइए आप. ओके. सो चैतन्य देव, I would request everybody to come so that I can closer. see. You can see. सब इनका आई कांटेक्ट चाहते हैं तो आप थोड़े नजदीक आ जाइए, यहाँ आ जाइए. चावला जी कुर्सी लेकर नजदीक आओ. आपका ये 2-3 दिन जो भी है आपका पूरा लाभ उठाएंगे हम लोग. इंडिया में तो आप इधर उधर हो जाते हो, लेकिन यहाँ तो पकड़ में आ गए, कहीं जा नहीं सकते. नो फैक्ट्री, नो टीवी मैन्युफैक्चरिंग, no nothing. Yes. Thank you, Manoj, for giving an opportunity to present. It was a pleasure to be here in the association of all the devotees and all the Vaishnavas, God brothers, God sisters, Guru Maharaj, Guru Mata. It's a wonderful opportunity, so I thank everybody to attend this presentation. I have actually no qualification to present, but Maharaj's mercy and his blessings and Guru Mata's blessings, I am able to put this little presentation together. So if there's any mistakes, please forgive me. But this presentation is a little interactive, so I'll be asking questions also, and we'll make this presentation a little fun. And I hope after this presentation there are some questions which we can answer, and take some points home after this presentation and apply it to our life. That's the whole idea of presentation. हिंदी में बहुत मुश्किल है, but anyway मैं कोशिश करूँगा. बीच में क्योंकि पूरा प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, तो anyway थोड़ा कोशिश करेंगे. Okay, Hare Krishna. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanaya Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Padamayam Tadapi Sva Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padamanam Shri Guru Shri Vaishnava Shri Rupam Sagrajatam Sagrana Raghunatha Amritam Samsariru Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Shri Lalita Vishakam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopi Shri Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabham Sute Devi Pranamami Hari Priya
Vancha kalpatarunyasya ca kripa sindhuvaya ca patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Thank you. So this today's presentation, the title is the 7 benedictions of chanting Hare Krishna. Benedictions का हिंदी क्या होता है? फायदा So 7 वरदान हरे कृष्ण जप करने के. Okay. So ये प्रेजेंटेशन जो है ये पहले श्लोक पे आधारित है शिक्षा अष्टकम के, जो चैतन्य महाप्रभु ने पूरे संसार को दिया. महाप्रभु ने कोई ग्रंथ नहीं लिखे, कोई वेदास नहीं लिखे, सिर्फ अपनी शिक्षाएं 8 अष्टकम में दी. इसे कहते हैं शिक्षा अष्टकम. और ये शिक्षाएं को आगे विस्तार में लिखने के लिए अपने शिष्यों को बोला, जो उनके डायरेक्ट शिष्य पहले 6 गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी. तो इन शिक्षाओं के आधार पर उन्होंने सारे ग्रंथों की रचना करी, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, शिक्षा अष्टकम, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे आगे जो वैदिक शास्त्र हैं उनके हिसाब से उन्होंने भक्ति शास्त्र, बिकॉज महाप्रभु का जो मेन, हिंदी में बहुत मुश्किल है एक वर्ड बोलो, नहीं कोई बात नहीं, कोशिश करूँ. तो हाँ, तो एनीवे मैं थोड़ा मिक्स करके बोलता हूँ. तो महाप्रभु gave instruction to his direct disciples, 6 Goswamis, to write about devotional service based on शिक्षा अष्टकम. तो आज का जो प्रेजेंटेशन है ये पहले श्लोक पे आधारित है, और ये जो श्लोक है अभी हम रिसाइट करेंगे. तो ये उसका बैकग्राउंड है, क्योंकि महाप्रभु ने जो शिक्षा अष्टकम दिया तो मेरे पीछे पीछे दोहराई. चेतो दर्पण मार्जनम भव महाद्वा अग्नि निर्वापणम क्षय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदां प्रतिवर्धनम प्रतिपदां पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मना स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम. Translation. Glory to the Sri Krishna Sankirtan, which cleanses the heart of all the dust accumulated for years and extinguishes the fire of conditional life, of repeated birth and death. This Sankirtan movement is the prime benediction for humanity at large, because it spreads the rays of the benediction moon. It is the life of all transcendental knowledge. It increases the ocean of transcendental bliss, and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. Sri Shiksha Ashtakam. This translation is by His Divine Grace Sri Bhakti Swami Srila Prabhupada. So the
first is cleanses the mirror of the heart. Cheto darpan marjana. Cheto means chit, consciousness. Darpan is, the description of darpan in our Vedic Shastra is mirror, darpan. And marjanam means cleanse, safai. Tan mandir marjanam. Right? So, cheto darpan marjanam. Cheta means consciousness, which is compared to the mirror. So, what is Cheto Darpan Marjanam? As the dusty mirror obscures the image of the object, थोड़ा हिंदी में as the dusty mirror obscures the image of the object, similarly, contaminated consciousness obscures the one's real identity. जैसे सवेरे सवेरे जब आप उठते हैं और अगर बाथरूम का मिरर एकदम ओस से भर जाता है, गर्म पानी से कोई शावर लेता है तो फिर क्या होता है, ओस से भर जाता है। तो फिर अगर अपनी शक्ल देखना चाहे मिरर में तो क्या दिखेगा नहीं, तो फिर उसको हटाना पड़ता है, तब अपना चेहरा नजर आ जाता है। तो इसी तरह जो चित्त का दर्पण है उसको क्या करना है, उसका मार्जन करना है, उसको सफाई करना है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड चेतो दर्पण मार्जन। और ऑब्स्कर्स वंस रियल आइडेंटिटी। सो आपको कई लोग बोलेंगे कि मेरे को सफाई करने का क्या जरूरत है, मैं तो अभी शावर लेके आया और मिरर में देख रहा हूँ अपने आप को, सफाई की क्या जरूरत है, अभी तो सफाई किया। तो किस चीज का सफाई किया? शरीर। और मैं शरीर हूँ या नहीं? हाँ, नहीं। तो मैं जो हूँ वो मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ। तो इसलिए उसका, और वो मैं कैसे जानूंगा? क्योंकि आपको बताएंगे इसको अभी तक। तो पहले लेट्स टॉक अबाउट डस्ट ऑफ द हार्ट। क्या है, क्या है अंदर जो मैल है वो क्या है? एनीबॉडी वांट्स टू वॉलंटियर? हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, श्रेय। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये है, इसको कहते हैं हिंदी में गंदगी। तो कितना बड़ा कार्य होगा जब इसको निकालना पड़ेगा। और मेडिसिन जो प्रभुपाद जी ने महाराज जी को 16 माला, यानी वो आएंगे उसके ऊपर। तो ये है डस्ट। 6 चीजें हैं। काम is lust, Krodha is anger, Lobha is greed, Padi? Illusion. Illusion. Moh is illusion, mud, pride, and matsarya is anger. So this is the dust. And how does this dust came? When I was born, I didn't have this, right? Or did I have this? When I was packed in the womb, I'm praying. 3rd canto of Srimad Bhagavatam. Soul is praying. Before that, the soul is praying to Krishna. He's already contacting Krishna inside. Because he's got the human form of life. And he's praying. So, very precarious condition, right? He's praying, Krishna, I'm trying to contact you. And he has a contact with Krishna. He says, okay, take me out of this position. He's hanging upside down.
And that's the second slide. So this is the dust. Millions of years. Thick layer. This layer of anarthas, dust of heart, is very, very thick. It's not something that you can get it cleansed tomorrow. Actually you can if you can chant the pure name of God. So very thick layer. Accumulated since millions of lifetimes. In Maharaj's lecture, every time Maharaj says, Anadir Bahirmukh Jeev. Anadi Kal se, time immemorial, the soul is accumulating this. In this lifetime, in human form of life, he can get rid of the dust. So accumulated in millions of years. If you accumulate your Lakshmi for millions of years, how much of Lakshmi you will have? So assume anybody whoever is making whatever Lakshmi in their material life, if they continue to exist for millions of years, how much of Lakshmi you will have? Can you imagine? Yes? Huh? Lots of lots. Similarly, we have accumulated this dust for millions of years. Not 1 million, millions. S. I should have underlined it. S. Millions of years. So lot of dust. How much of cleansing is required? You can start imagining. So please imagine, ask questions. Very, very interactive presentation. This is a beautiful picture. Everybody will love to see. Tell me what you like about this picture and how it relates to that. And how do you relate yourself to this picture? Because when we see something, the image gets stuck. Like deities. When we see deity images in our mind, correct? So how do you relate yourself to this picture? How do you see yourself to this picture? Who is this? Huh? इसको इंग्लिश हिंदी में बंदर वृंदावन में बंदर है वृंदावन का बंदर है वृंदावन का नहीं है बट एनीवे वृंदावन और क्या देख रहे हैं तो ही इज हैंगिंग टू एन अपसाइड डाउन बट तो व्हाट इज हिज सिचुएशन ही इज अबाउट टू फॉल ही इज हैंगिंग ऑन टू दिस ये किसको पकड़ा हुआ है टहनी को पकड़ के रखा है फिर भी किसके बारे में सोच रहा है गिरने वाला है फिर भी ये सोच रहा है ऐसी कुछ हालत हमारी भी है कि नहीं है हाँ तो ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे कैसे लटके हुए दिस इज व्हाट इज अ मटेरियल लाइफ and this is what we have to remember every time. Is my situation like this, or am I better than this, or am I worse than this? This is what we have to think. If we do not think this, then what happens? We just keep on going, thinking we are good, advancing, everything is nice, but all of a sudden, one day something happens and you say, I am chanting for 30 years, I cannot have this, but all of a sudden you start thinking about all this. So this is check and balance. Check and balance means, in material world you keep increasing your material balance. We just talked about dust of the heart. So here what you have to do? Indeed. इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा. ये सब चीजों को इसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा. तो उसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस. चेक एंड बैलेंस का हिंदी क्या होता है? तो ऐसी कुछ हालत हमारी भी है. नीति ध्यासन, सेल्फ एग्जाम, सेल्फ एग्जामिनेशन, नीति ध्यासन. अपने आप को चेक करना, नियमित. तो महाराज हमेशा प्रभुपाद ऑल्सो से महाराज ने मुझे बोला था कि मैंने महाराज से क्वेश्चन पूछा था आज से 5 साल पहले कि महाराज मैं कैसे मुझे पता लगेगा कि मैं एडवांस करूँ.
आप मुझे बताएंगे या कौन मुझे सर्टिफिकेट देगा? तो मैं बोला नहीं, चेक एंड बैलेंस. कृष्ण knows and you know how much you are advancing. So हमें तो ये सिचुएशन हमें उल्टी करनी है, और तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा. इमेजिन ये ऊपर गया तो ये नीचे आ जाएगा. So that is our condition. So काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, accumulation millions of life. तो ये चित्त का जो दर्पण है, ये अब कैसे साफ होगा? We'll come to the next slide. Any questions on this so far? Sometimes we don't even realize that we have pride because we are still, we have our own, हमारा खुद का मापदंड होता है. तो हम तो फिट हैं तो we feel we are okay, but only somebody else can tell us. नहीं, वो like Prabhupada was mentioning just now, right? The nature of the material world is envy. Owner's pride, neighbor's envy. I am big. I am a big guy. मैं बड़ा हूँ, मैं so and so का disciple हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं इतना कुछ किया. क्या है? Pride. कुछ नहीं किया. तो owner's pride. और जो बगल में उसका जो दूसरा, I'm just taking another example. तो he has what? He has envy. तो उसको pride है, owner's pride and neighbor's envy. बड़ा कार लेके आया या संदनी माता जी को कुछ नया घर लिया, तो बगल में जो है उसका envy. कैसा ले लिया बड़ा घर? क्यों लिया? कैसा हो गया? है ना? इसके पास तो ये माता जी के पास तो सब महाराज लोग आते हैं, मेरे पास कोई नहीं आता है. एनवी. तो वो चेक एंड बैलेंस, खुद से चेक करो. तो हाउ यू नो इज, जब तक आप चेक नहीं करोगे तब तक कैसे होगा? जैसे अब कार का रेडिएटर है, ऑयल चेंज है, वो तो मशीन है तो इट गिव यू इंडिकेशन. तो हमारे बॉडी भी मशीन है, तो हमें अपनी बुद्धि से ये मापदंड करना पड़ेगा कि वे हमारे अंदर कितना है, लस्ट कितना है. लस्ट मतलब काम मतलब मुझे कितना एंजॉय करना. तो एनीवे, तो ये श्री कृष्ण नाम can scrub and cleanses the heart. This is the only method in this day and age. And everybody has heard this so many times. Hare Naam, Hare Naam, Hare Naam. This is the only method and process to cleanse this dust. And this dust is accumulated for millions of years. Millions. तो हमारे पास जो टाइम मिलता है वो भी एनफ नहीं है क्लीन करने के लिए. और उसमें भी हम, जैसे महाराज बोलते, कभी कभी देखेंगे, कभी होगा, सोचेंगे नहीं कैसे होगा. मिलियंस ऑफ इयर्स. एंड Prabhupada in his lecture says, some rascal will say, oh, what if I become a dog in next life? I don't care. No, you care because Krishna has given you this. भगवान कृष्ण ने आपको ये मनुष्य शरीर दिया, इसलिए ये मैल साफ करने के लिए. और प्रभुपाद जी जैसे और महाराज जैसे संत अगर नहीं आते तो कैसे साफ होगा? नहीं होगा. तो कृष्ण नाम can scrub and cleanses the heart. Let's go to the next one. Any questions on that slide? कोई प्रश्न, समाधान? अब इसमें there are 3 slides on this. So चेतो दर्पण मार्जनम, right? Then next Mahaprabhu says भव महा द्वा अग्नि निर्वापणम. दोबारा बोले, सब कुछ एक साथ बोलेंगे. भव महा द्वा अग्नि निर्वापणम. In Bhagavad Gita, Krishna characterizes this material world as, who knows?
मटेरियल वर्ल्ड को भगवान कृष्ण भगवद गीता में क्या बताते हैं? हाँ? नहीं, मटेरियल वर्ल्ड को कृष्ण भगवद गीता में क्या बताते हैं? एनी वॉलंटियर? आई कैन नॉट सी माता जी. Temporary and full of miseries. So what does Krishna says? What is that? Dukkhalem asashvatam. 850. Full of dukh. Dukkhalem asashvatam. And then second one is anityam asukham lokam. What is that? Anityam asukham. Sukham is sukh, asukham is dukh. And lokam, this lokam. Krishna describes this material world as these two things in Bhagavad Gita. I may need more time on that after this. Huh? 1 hour, 1.5 hours. No, that I don't know. Beyond your time, I don't know, because... Or maybe I can do tomorrow. So part Yeah, of it. you can take a day. But he might come up with a prasadam. So, You take your time, whatever you have to do. So Krishna says this. Krishna बोलते हैं ये दुख है, दुखालयम शाश्वतम. ये भौतिक जगत पूरा दुख से भरा हुआ है. तो कौन दुखी है? और in other words, जो दुखी नहीं है वो आदत है. हाँ? तो इसका मतलब हम सब दुखी हैं. तो दुख का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में उसको बोलते हैं मिजरी. इंग्लिश में उसको बोलते हैं मिजरी. तो मिजरी क्या है? ये है डेफिनेशन मिजरी की. बहुत अच्छी डेफिनेशन है. क्या है? पढ़िए. To not get what we want and to get what we don't want. तो जो चाहिए वो नहीं मिलता, जो नहीं चाहिए वो मिलता है. तो इसको कहते हैं दुख, मिजरी. हाँ? तो किसको यहाँ जो चाहिए वो मिला और जो नहीं चाहिए, जो चाहिए वो नहीं मिला और जो नहीं चाहिए वो मिला. Speaker, because you are facing your microphone towards जैसे. maybe we can move the speaker. So that is misery. Just unplug it for now, but when he's maybe we can move that because everybody. तो इस परिभाषा के हिसाब से सब मिजरेबल हैं. सही है कि गलत है? तो लेकिन ये जानना कि मैं दुखी हूँ, इसके लिए भी थोड़ी क्या चाहिए? सूक्ष्म बुद्धि, स्पिरिचुअल थोड़ा सा एडवांस एक होना चाहिए कि हाँ मेरे को दुख क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए. और है ना? और अगर ये नहीं पूछेगा तो उसको दुख भी आनंद लगता है. तो अब ये भौतिक जगत तो है दुखालयम शास्त्र, लेकिन अगर इसमें क्षण भर का भी अगर सुख नहीं होता तो सब लोग हताहत हो जाते हैं. तो क्षण भर का सुख मिलता है, वही है उस, तो लेकिन वो सुख नहीं है. तो वो क्षण भर के सुख के लिए आदमी क्या लेता है? सारे दुख लेता है. वो चपल सुख लेने के लिए, चपल सुख लब लागी रे. तो ये चपल सुख जो है उसको ग्रहण करने के लिए सारी कठिनाइयां लेता है. ये मिजरी की कंडीशन है. और वही बंदर की डेफिनेशन थी, लटका हुआ है उल्टा. तो ये भी समझने के लिए कि मैं दुखी हूँ, थोड़ा सा सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, थोड़ी आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए. अब उसका एग्जाम्पल देते हैं. लाइक ड्रंकर्ड, जो शराबी है, और शराबी हमेशा सोचता है कि वो बहुत खुश है. तो ये पढ़िए, ये देखें, सफरिंग फ्रॉम विजन. ये एक एड है, ड्रंकर्ड ने लगाया है. सफरिंग फ्रॉम विजन, hearing, speech impairment, with an unsustainable appetite for pizza. Will do anything that moves, possessing an ill
illogical belief that he or she is gorgeous despite dribbling and slobbering. मतलब कहने का ये है कि जो शराबी है वो अपने आप को बहुत खूबसूरत समझता है और बहुत ही है, लेकिन उसको एपेटाइट बहुत है खाने की, लेकिन वो सोचता है कि वो तल्लीन है एकदम। महाराज ये वर्ड यूज करते हैं कि तल्लीन, वो तल्लीन है, लेकिन उसको नहीं पता कि उसकी हालत क्या है, उसकी चेतना कितनी उसका दर्पण कितना गंदा है, उसको कितना मार्जिन करना पड़ेगा, उसको ये आइडिया नहीं है। तो जो ना होगा ना होगा तो इसका मतलब क्योंकि उनको स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं थोड़ा सा चाहिए तो है नहीं। वो मैं पॉइंट आई वांट टू मेक श्योर एवरीबॉडी गेट्स, क्योंकि उसको कुछ वो नहीं है, इंक्वायरी की इंटेलिजेंस नहीं है। तो बाबा महाद्वा अग्नि निर्वापण, रियल प्रॉब्लम्स क्या क्या है, जो सही दुख है वो क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ, ये है रियल प्रॉब्लम। नोबडी वांट्स इट, nobody can avoid it, it's common to all, everybody will get it. What are those? व्याधि, डिजीज। हम ये ऑर्डर में जाएंगे, फिर बताएंगे क्यों ये ऐसा क्रम क्यों। व्याधि मतलब रोग, डिजीज, जरा, ओल्ड एज, मृत्यु, डेथ। बर्थ इज ऑल्सो देयर, बट बर्थ के बारे में हम बाद में थोड़ा जानेंगे, लेकिन व्याधि, जरा और मृत्यु के बारे में थोड़ा वार्तालाप करेंगे। आई वॉन्ट टू बी गॉड, बिकॉज उसी इच्छा प्रवृत्ति से हम लोग आए यहाँ पर भोगने। तो मिला क्या? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ये है दुख। अब आप बोलेंगे भाई आप, मैं तो दीक्षित, आप मुझे ये क्यों बोल रहे हैं? मेरे को तो मालूम है, लेकिन पॉइंट है टू उसको बार बार ध्यान करना कि ये मेरी तकलीफें हैं, ये मेरी रियल प्रॉब्लम है और इसका मुझे हल जल्दी से जल्दी इसी जीवन में निकालना है। और 3 क्लेशेस क्या है, तीन मिजरीज क्या है? आदि भौतिक, आदि वैदिक, आप तो सब बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो आदि दैव क्लेश, आदि दैव, देन आदि भौतिक। ये आदि भौतिक है। देखो अफ्रीका में गया था वेकेशन के लिए, लेकिन पीछे राइनो पड़ गया और भाग नहीं सकता, तो क्या हालत होगी उसकी? कृष्ण को याद करेगा अगर उसको थोड़ी सी बुद्धि हो तो, नहीं तो जीव जीवस्य जीवनम। और आध्यात्मिक, एंगर, जेलसी, वरी, डिप्रेशन, all that stuff. तो इसमें से इन तीनों क्लेशों में से आप कौन सा क्लेश के ऊपर, या आपको पता लग सकता है कि उस पे मैं आई कैन वर्क ऑन इट, मैं किस पे काम कर सकता हूँ? आध्यात्मिक। आदि दैविक तो आपके हाथ में नहीं है, और आदि भौतिक वो भी कंट्रोल में नहीं है। और आध्यात्मिक आध्यात्मिक कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने खुद शरीर और
मन द्वारा किया होता है। तो प्रभु जी शरीर की मुसीबतें भी कुछ ज़्यादा I cannot say much, आप इधर आइए। You have eye contact, you should demand that. मैंने बोला था माता जी यहाँ बैठी थी उधर चली गई। I always demand my audience, Eye if they don't have eye contact with me, I tell them. Maybe you should sit on the chair. That is also true in a way. Oh my God. हाँ तब That's why I said Vyasa. Watch out. Because this person is in the way. And then Lord's. तो आध्यात्मिक जो क्लेश है वो हम हाँ माता जी आपका प्रभु जी मैं कह रही थी कि शरीर के भी जो दुख है उसके बारे में आप ज़्यादा कुछ अपनी तरफ से जो आने हैं वो तो आने हैं, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। बुढ़ापे में पैर नहीं चल रहे हैं या कुछ ब्लड प्रेशर हो गया वो भी वैसे ही। हाँ तो उसकी जो दवाइयाँ जो आजकल हैं वो आप कर सकते हो। लेकिन हाँ शरीर को आत्मा के साथ जोड़ के रखना आध्यात्मिक जीवन का पहला कर्तव्य भी होता है। ऐसा नहीं कि मैं शरीर हूँ तो मैं इसको नेगलेक्ट कर दूँ, तो फिर आप स्पिरिचुअल लाइफ कैसे करोगे? कैसे बैठ के 16 माला करोगे? फिर एक बार बैठ के मेरा पैर दर्द हो गया, आई नीड टू वॉक, उधर से फिर फोन बज रहा है, उधर से कोई दूसरा आदि भौतिक क्लेश, क्या माला होगी? नाम ही नहीं होगा। महाराज ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया था जब टोरंटो आए थे लास्ट ईयर, पूरा मन के ऊपर दिया था 6 चैप्टर। सबने सुना था? वैंकूवर कनाडा आए थे। 4 days we had 4 day कॉन्फ्रेंस कॉल था। तो क्या था उसमें? मन के ऊपर तो इट वाज ऑल ऑन माइंड, मन एंड आध्यात्मिक body and mind. So Krishna, that's why in Bhagavad Gita he is saying, okay, give me your mind, Arjun, right? Arjun didn't want to fight. Arjun युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन कृष्णा ने उसको इंस्टिगेट किया, नहीं, you have to fight. So इसलिए Bhagavad Gita is a mystery. So we have to, the more we advance, the more we can. Every time sloka, new realization comes. When as relates to your experiences. So इसलिए body and mind. So body you have to keep fit, but not extra fit. Take 5 hours in a gym. No need. Half an hour, 1 hour exercise is recommended. You will have to cancel your membership. You will have to cancel your spa membership. You have spa membership. You was going. We have a rec center. $80 a year pass. So not that you have to go 4 hours in the gym. Yeah, half an hour, 45 minutes body, you have to keep fit. Maharaj taught pranayam today to keep the body fit. So that's fine. But as much as required for spiritual life. Not more, not less. So you have to take care of the body. Was that your question? आपका यही question था? यही कि आपने कहा कि किस चीज़ को हम अपने मुताबिक कुछ कर सकते हैं जिसके बारे में, तो मतलब कि शरीर की मुसीबतें आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुसीबतें तो मुसीबतें आती हैं। लेकिन शरीर का एक सबसे अच्छा चीज़ क्या कर सकते हैं कि जैसा आहार वैसा व्यवहार। तो जो खाते हैं वो सिंपल खाएं। महाप्रभु also recommends चैतन्य चरितामृत, भला ना पाइबे, बालो ना खाइबे, बालो ना पहनिबे। But Prabhuji, she means that like certain problems come to you anyway. हाँ वो तो आएगी क्योंकि that's what she's saying. क्योंकि ये वर्ल्ड दुखालय में शाश्वत है, full of misery. You cannot stay without any problem. Problem will come. But जो भक्त लोग हैं उनको जब प्रॉब्लम आती है तो वो सोचते हैं कि कृष्ण इज वेरी मर्सीफुल टू मी, थोड़ा सा पेन दे दिया, बट मेरे को ज़्यादा आनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि मैं मिलियंस ऑफ ईयर से मैं क्या कर रहा हूँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य आनी चाहिए ज़्यादा, लेकिन थोड़ी सी आई। तो कृष्ण इज वेरी मर्सीफुल, अपॉर्चुनिटी टू रिमेंबर कृष्ण। तो इसलिए शरीर और मन
तो ये तीन क्लेशा है और ये चार, तो ये क्या है, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज भव, अभी हम जाएंगे उसको, भव महाद्वाग्नि निर्पापणम, महाद्वा अग्नि, तो अग्नि इज फायर। अब जो फायर जो है, मिजरीज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, शास्त्र कंपेयर्स मिजरीज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड विद, राइट है, व्हाट इज द आंसर? शास्त्र कंपेयर्स दिस मिजरी भव महा, हाँ, किसके साथ कंपेयर करते हैं? अग्नि के साथ कंपेयर्स विद भव महाद्वा अग्नि। व्हाट इज दैट? A great forest fire. You know my presentation. Because why it is forest fire? Forest fire की characteristic क्या होती है? Uncontrollable. It cannot stop on its own. खुद नहीं बुझेगी। तो हमें सबको अग्नि लगी है, तो खुद बुझ जाएगी। लेकिन अभी बुझने का प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुका है हमारा, महाराज की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से। एनीवे, तो ये खुद रुकती नहीं है। जो अग्नि है ये भव महाद्वा अग्नि से अपने आप से रुकने वाली नहीं है, क्योंकि फायर जो है, जैसे क्या कैरेक्टर, अभी सैन डिएगो में फायर लगी थी अभी, क्या ना, कितने थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एकड़ इसने बर्न कर दिए, और एक के बाद एक, और जल, जैसे जब आग लगती है तो क्या है, जड़ से पूरे पेड़ को खत्म कर देती है, काले हो जाते हैं पेड़। तो वैसे ही अग्नि सबको लगी, लेकिन हम अंदर जो अग्नि है, हाँ हमें और चाहिए और करना है, अभी करेंगे, बाद में भी 16 माला कर लेंगे, अभी देखते हैं, बाद में पढ़ेंगे भागवतम। ये क्यों? अग्नि है, ये अग्नि है, कैनॉट स्टॉप ऑफ हिज मूवमेंट। तो क्या, कैसे स्टॉप हो सकती है? ओनली द डिसेंट ऑफ ए रेन कैन स्टॉप। अग्नि जो है कैसे स्टॉप? हेलीकॉप्टर जाते हैं ना, ऊपर से पानी बरसाता है, तो फिर भी नहीं बुझती। लेकिन अगर इंद्र पानी बरसाएगा, so the solution to the suffering of this world is not a different world view, but a different view of the different world to view, not a different view of the world. वर्ल्ड तो सब अग्नि है, तो हाउ कैन आई थिंक कि वहां पर अग्नि नहीं है, हमें सब ठीक है? दैट इज इल्यूजन, बट अ डिफरेंट वर्ल्ड टू व्यू। समझे? दैट इज द सोल्यूशन। दैट इज व्हाई हरे कृष्णा पीपल गो अपोजिट करंट, बिकॉज दे आर व्यूइंग अ डिफरेंट वर्ल्ड। गोलोक, भौतिक जगत में क्या लगा है? अग्नि लगी है, लगी है कि नहीं? तो जब अग्नि लगी है सैन डिएगो फायर में, और मैं अपना मुंह इधर कर लूं, हाँ सब ठीक है, नहीं, उधर अग्नि लगी है। तो अगर मैं अपना विजन चेंज कर लूं, डिफरेंट वर्ल्ड टू व्यू ऑल टुगेदर, जहां अग्नि नहीं हो, माय प्रॉब्लम इज सॉल्व, राइट? दैट इज इंटेलिजेंस। उसे कहते हैं बुद्धि, व्यवहारात्मिका बुद्धि। गोलोकेर एव प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। Ruthandas Thakur very nicely sings this bhajan. So how it is rain is coming? Golokera eva prema dhana. It is descending from Golok, from that world which we want to view. जो दुनिया हम देखना चाहते हैं, वहां से हरे कृष्ण मंत्र आता है। In fact, there's a nice photo also. वो इसमें there was no space, but Hare Krishna. In fact, last presentation we showed the universe का पूरा. उसमें Krishna is playing flute और Hare Krishna mantra descending. So that is rain. And who? अब ये रेन जो है आर्टिफिशियल रेन नहीं है, हेलीकॉप्टर से गया, पानी ड्रॉप किया, आग बुझ गया, बुझ जाएगा? नहीं बुझेगा। तो कौन लेके आएगा रेन? गुरु कौन लेके आएगा रेनू? गुरु महाराज। Yes. The supreme treasure of divine love in Goloka has descended as a congregational chanting of the holy names of the Lord. Lord Hari's holy name.
Sri Guru, the resident of Goloka, brings the holy name to the disciple. Very important here. The resident of Goloka. He is a resident of Goloka. Because if he is not, how is he bringing rain? Not possible. And his representatives, like Prabhupada and his representative, Maharaj, all the other Vaishnava Acharya was preaching. That is why Guru becomes very dear to Krishna, because he is dropping that rain. Remember, Krishna has two topmost qualities. Actually, powerful means all powerful, and he is all merciful. He is all merciful. Because he suffers also. We are suffering in this Dava Agni. That is why the spiritual master gives the rain, drops to his disciples. But disciple think, हाँ अभी तो चले गया, अभी हो गया, अभी मैं ठीक हूँ. बट वो हालत वैसी की वैसी हो, बंदर की तरह उल्टा लटका हुआ. तो कैसे चलेगा दावा नल? कैसे? हाउ विल यू? निकलना है. वी हैव टू निकलना है, जल्दी निकलना. So Sri Guru, the resident of Goloka, means pure devotee, brings the holy names to the disciple, just like the cloud causes the rain to extinguish the fire. तो इसलिए scientific advancement of material civilization has no value. Because अभी गर्मी पड़ेगा तो सब लॉन को वाटर नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, पानी का रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा. इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, अभी यूएस में भी आ गया, राइट? बट गोल्फ कोर्स में दे कैन डू वाटर लाइक एनीथिंग बिकॉज दे गेट मनी, राइट? सो व्हाई? तो लेकिन समुद्र पूरा है, 70% ऑफ द अर्थ, 60% ऑफ द अर्थ इज वाटर. तो क्यों नहीं पानी आ रहा है? क्या आंसर है? वो पानी नहीं पी सकते? पी सकते हैं? क्यों नहीं पी सकते? हाँ, तो वो अनसॉल्टी कैसे होगा? बिना नमक के कैसे बनेगा? जब तक प्यूरिफाई नहीं होगा. और प्यूरिफाई कौन करेगा उसको? हाँ? कैसे होगा वो प्यूरिफाई? कैसे होगा? जब तक वो तब से ऊपर नहीं जाएगा और वो बादल नहीं बनेगा और वो बादल बरसेगा नहीं और वो बरस के नीचे नहीं आएगा, पहाड़ों के थ्रू, रिवर के थ्रू, पॉन्ड नहीं बनेगा, तब तक कुछ नहीं कर सकते आप. तो इसका मतलब साइंटिस्ट को समझना चाहिए कि आई एम दिस वाटर इज ऑल्सो अंडर कंट्रोल ऑफ सम हायर अथॉरिटी. तो ये हम यहाँ ये इसकी बात कर रहे हैं, फायर की और वाटर ऑफ कंडीशनल लाइफ. भव महाद्वाग्नि जो है उसको कैसे बुझाया जाए. तो हमारे पास उसकी की है, लेकिन हम उसको लॉक कर देते हैं बार बार. लॉक कैसे करते हैं? वो लॉक कैसे होता है? क्या होता है वो लॉक? बाहर ले जाओ उनको मामा. हाँ, मतलब उनको बाहर ले जाओ. दावाग्नि तो पता लगा क्या कैसे है, लेकिन लॉक कैसे हो जाता है? माया अटैक करती है और हम भूल जाते हैं. क्योंकि वो हमारी, महाराज बोलते हैं, क्योंकि वो हमारी ये हमारा जो ये गोलोक के प्रेम धन हरि नाम, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं रहती, दूसरी चीजें प्रायोरिटी ले लेती है. तो इसलिए भक्ति रिट्रीट, दैट इज व्हाई मस्ट हैव टू कम. तो अगर ये प्रायोरिटी नहीं लेगी तो क्या होगा? आपने पैसा कमाया. Prabhupada says that an intelligent man, if a man has got $100,000, then an intelligent man will know how to make another 100,000 from that 100,000. That is intelligent man. So he will put that money to use. वो उसको पैसे को इस्तेमाल करेगा. और जो खाली अपना बैंक रोज रात को अकाउंट लॉगिन करके, हाँ 100,000, हाँ अभी ठीक है, अब मैं फिर कल को फिर रात को लॉगिन, हाँ 100,000, गुड. He is miser, कंजूस, मक्खी चूस. उसकी लाइफ में क्या होगा? दुख ही दुख. तो यहाँ स्पिरिचुअल लाइफ की बात हो रही है. स्पिरिचुअल लाइफ की बात यह है कि हमें उस चीज को
प्रायोरिटी आध्यात्मिकता देनी है, प्रथात्मिकता, प्राथमिकता, प्रायोरिटी। तो अगर वो हमारी प्रायोरिटी नहीं रहेगी तो क्या होगा? आर्टिफिशियल, हम भी रेन में हाँ बुझ गए, लेकिन बुझा नहीं है तो हम क्या करेंगे? हाँ वो ठीक हो जाएगा, वो आग जल रही है, डिफरेंट वर्ल्ड व्यू, बट ए डिफरेंट वर्ल्ड टू व्यू नहीं रहेगा, हम वो वही वर्ल्ड का डिफरेंट व्यू बना देंगे। तो वही वर्ल्ड का अगर डिफरेंट व्यू बना के आप लोगे, उसे कहते हैं पुनर्चर्वित चर्वनाना, प्रहलाद महाराज से, चूइंग द चूल, सेम थिंग को दोबारा, ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। लेकिन हमें पता भी नहीं लगेगा कि कब माया ने अटैक कर दिया। तो इसलिए चेक एंड बैलेंस इज मस्ट इन स्पिरिचुअल लाइफ, एवरी डे, एटलीस्ट इन माय, आई ट्राई टू डू इट एज मच एज आई कैन, because if you don't do, then and then we have to reveal the heart. Well, anyway, वो तो पूरा, that's another topic, but this is Mahadva Agni. So when we read this shloka, we should remember, this is Dva Agni. Why we recite this every day? Because we have to know what this is. But if we just recite like a parrot and go, then we don't even know. So we have to associate with this instruction. Am I on time, Mara? Yeah, 5 or 10 minutes. And I am still on 4th slide. मेरी थोड़ा बोलो क्योंकि प्रभु ने सारा मिस किया जो खाना बना रहे हैं। अच्छा। आपको उपमा खिलाता हूँ सब लोग। Very good, very good. Bhog Yeah, we have. okay? हाँ? Bhog? देखा? हर कोई वो सुनने दो 5 मिनट। Okay. Maybe somebody else can volunteer to Bhog offering. Bring the book. Okay, so इसमें यहाँ पर एक चीज और I will like to किचन का है। say is like for example, if you go to, I don't know, has anybody volunteered or served in a hospital or a hospice center or any time? Huh? Diseased people, anything? Okay. So when you go to these centers or hospitals, people are sick. Naturally our condition is sick, but physically they are sick. Because the material body, there are some liver problem, this problem, that problem, other problems, right? But if man is sitting on the bed, or Mataji is, woman is saying, you ask, उनसे पूछो कि भाई आप कैसे हो? How are you doing? I'm doing very good. How is he doing good? He is about to die. He is having cancer. He is having so many liver problems. तो नॉर्मली जो मेटीरियलिस्टिक लोग होते हैं बोलेंगे भाई पॉजिटिव रहो, उसको बोलो हाँ ही इज डूइंग गुड, बोलो हाँ ठीक हो जाए, ठीक है वी से ठीक हो जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट अ डिवोटी, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी मेटीरियलिस्टिक पर्सन। आई एम डूइंग गुड, ही इज नॉट डूइंग गुड। सो ठीक है, ही इज ऑप्टिमिस्टिक। द पॉइंट आई वांट टू ड्राइव होम ऑन दिस टॉपिक इज ही इज ऑप्टिमिस्टिक, बट विदाउट just being optimistic is not enough. Just ये रहे कि हाँ हम प्रगति करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, everything is right. कृष्णा जो करता है ठीक होता है, जो होता है आज जो होगा ठीक हुआ, कल जो होगा ठीक होगा, परसों जो होगा ठीक होगा। नहीं, वो आपके ऊपर है उसको ठीक करना। वो ये सब हुआ, जो हुआ ठीक हुआ, जो होना है वो ठीक होगा। That is मायावादी philosophy. हमारे हाथ में है ठीक करना। हाँ, परिश्रम। इसलिए अर्जुन को भगवान बोलते बार बार तो युद्ध करो, यू हैव टू फाइट, बट बाय गिविंग योर इंटेलिजेंस टू मी, अपनी बुद्धि मेरे को दो एंड फाइट फॉर मी। दैट्स प्रभुपाद इज सेइंग ना, दैट किलिंग एंड यू आर सेइंग दैट किलिंग इन भगवद गीता महाभारत इज डिफरेंट फ्रॉम स्लॉटर हाउस किलिंग, बिकॉज दिस इज whimsical, आउट ऑफ योर ओन, राइट? लाइक सोल्जर किलिंग, जो जवान होता है वो बॉर्डर पे जब दुश्मन को मारता है, उसको उसका कर्म नहीं लगता, क्योंकि वो किसी और के हायर ऑर्डर पे इसके लिए। बट अगर वही जवान शहर में आके अगर ऐसे चाकू छुरी चलाएगा तो क्या होगा? ही विल बी हैंग। तो सेम किलिंग बट द रिजल्ट इज डिफरेंट। सो सिमिलरली जस्ट ऑप्टिमिस्टिक होना खाली कि सब ठीक हो जाएगा इज नॉट इनफ, इज गुड, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, गुडनेस की तरफ, बट एनलाइटनमेंट जरूरी है। ज्ञान थोड़ा सा होना चाहिए, एनलाइटनमेंट, कोई आके एनलाइटन करे। तो एनलाइटनमेंट विद ऑप्टिमिज्म
ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान कि भाई मैं क्यों सफर कर रहा हूँ, मेरे अंदर ये अग्नि क्यों लगी है, क्या है, इसका कोई उपाय बताए पहले क्या है, इसलिए तो एनलाइटनमेंट विद सम ऑप्टिमिज्म इज द सोल्यूशन. With that enlightenment you can advance. Just by optimism is called like enthusiasm. किसी के अंदर enthusiasm बहुत है लेकिन intelligence नहीं है. तो enthusiasm without intelligence means मूर्ख. मतलब दूसरा नौकरी ढूंढा नहीं, पहला छोड़ के बैठ गया, मूर्खता है. Right? घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नौकरी छोड़ दिया, सब ठीक है, लेकिन अरे अगर आपको छोड़ दिया स्पिरिचुअल के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर छोड़ के दूसरी ढूंढ रहे हैं तो गलत है. पहले ढूंढ के रखो, फिर सब ठीक करो. इंटेलिजेंस थोड़ा. तो ऑप्टिमिज्म विद एनलाइटनमेंट इज द की फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. हम क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा होते हैं, लेकिन एनलाइटनमेंट कोई करना चाहता है तो सुनते नहीं, क्योंकि हम शरणागत नहीं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम है. क्योंकि क्यों, कोम, काम, लोभ, मोह, वो सब डिजीज, रोग लगे. तो रोगी को जब डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन देता है तो उसको लेना चाहिए, अपने हिसाब से कम नहीं करना चाहिए. हाँ नहीं मुझे मालूम है मेरे कैसे कम करना. तो फिर अगर मालूम होगा तो फिर क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा. तो ये दैट इज द पॉइंट आई वांटेड टू मेक. आई थिंक माय टाइम इज 5 minutes more and then I will take this tomorrow also. So that is called Divya Jnana, right? The enlightenment is called Divya Jnana. For what we are discussing is Divya Jnana. That Divya Jnana, if we get from Guru, who is giving us the rain, then we accept that as our treasure, right? And we serve that. We serve what? We serve the instruction, which is Vani, and serve Vapu. Vani instruction is the main. So that Vani instruction of the Guru is whatever instruction we get. So we have to meditate on that. And that is our success of spiritual life. That's the presentation we gave last time. I don't know, most of you were not here. But that presentation we gave last time, Secret of Success. And Maharaj told me to say, okay, Google in Vedas look Secret of Success search. तो Secret of Success में 260 हिट है वेदावेस के अंदर. तो every secret of success is serving the instructions of spiritual masters. That is the only instruction. So इससे advancement होती है. तो that's how you get the rain, mercy. Then भाव शांत हो जाएगा, धीरे धीरे शांत हो जाएगा. लेकिन अगर हमें मालूम नहीं कि रेन हो रही है, अग्नि जल रही है, लेकिन हमने क्या खोला हुआ है, तो कैसे आएगी. छाता खोल दिया तो रेन गिर रही है, तो क्या होगा, राधे का नाम प्रभु, तो उससे फिर नहीं होगा. या आपको पानी चाहिए, रेन हो रहा है, आपका घड़ा आपने उल्टा करके रखा है, बोला कि या हाफ, तो पानी उसमें आ नहीं रहा, तो कहाँ से प्यास बुझेगी. तो ये सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा, हमेशा इस पे मेडिटेट करें. इससे मेडिटेट करने से आपकी एडवांसमेंट क्विकली होगी. नहीं हो सकती तो कम से कम ये, अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर पा रहे, लेकिन कम से कम उस पर मेडिटेट करें कि मैं इसको कैसे फॉलो करूं. कृष्णा महाराज मुझे थोड़ी, और दैट इज द सरेंडर. तो उससे थोड़ी बुद्धि आती है, उससे थोड़ा विकास होएगा. विकास मतलब आध्यात्मिक विकास. उससे थोड़ा रियलाइजेशन आपको आना शुरू होगा. तो ये है. तो इस पे टच करते हैं थोड़ा सा, फिर आप कल इसके वेरी 2-3 more nice slides. Then तो भव महाद्वाग्नि निर्वापणम, then श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण. Shreya means, okay, let's do the translation. So by chanting the holy name, the sadhaka's heart becomes white lotus, Kairava. So Shreya means topmost, and Kairava is lotus, and Chandrika is moon, Vitaranam is to distribute, to
focus, devoid of passion. So by chanting the holy name given by the Guru, who is resident of Goloka, who is giving you the holy name, what happens? Then sadhaka chants it with full enthusiasm and intelligence. Okay? Then what happens? His heart becomes like Cairo, white lotus. So dhire dhire, how this is related to the 6 anarthas? It will wash away. Dhire dhire it will wash away. So Kairava, the lotus, will start blossoming. जो उसका color है, it will start blossoming. How can you see the color? By that cooling. Chandrika Vitarana. Chandrika means the cooling rays of moon. Vitarana means it will fall and it will reflect. Vitar hoga uska, Vitarana hoga, to give. So when the burning effect of the fire of material life is extinguished, existing is extinguished, then what will happen? The holy name will start to benedict the devotee with the cooling moon-like rays, and which is bhakti. तो ये इसका मीनिंग है. क्या मीनिंग है? पढ़िए एक सेकंड. Read the. Chanting the holy names, the sadhaka's heart comes like lotus, white lotus karma, devoid of passion and ignorance. And then? When the burning effect of the fire of material existence is extinguished, the holy name starts to benedict the devotee with the cooling moon-like rays like bhakti. So, if we are not feeling that holy name is giving me cooling effect, actually it will give cooling effect. If you are chanting for a while, it will give you cooling effect. And cooling effect which is bhakti, which is devotion. Devotion to Krishna, devotion to Vaishnava, Vaishnava Seva, devotion to Maharaj, his mission. What is mission of Maharaj? So, his mission is to please Prabhupada. Prabhupada's mission is to preach Krishna's name. Right? So that becomes our mission. And how do we get more? So at least all the initiated disciples should think like this. All of us should think like, and this is my thinking. You may be different, please forgive me. You know? At least this is what I think. From what I have heard from Prabhupada, and we should meditate on the seva, Mani seva, and think about how can I do this? How can I do this more? And intelligently make ways to devise those techniques. Then, what will, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो क्या भक्ति अपने आप परसानुभव अपने आप it will come and cooling rays will be felt. हमारे को जो चंद्र की जो ठंडी जो किरणें हैं वो उसका हमें एहसास होगा. कि वो एहसास क्या होगा कि भव महाद्वाग्नि उसको ठंडा करेगी उसको. अगर और जल रही है इसका मतलब गड़बड़ है. We have to stop. We have to figure out क्या हो रहा है. अगर और जल रही है तो something wrong. Forget about the bliss right now. वो तो बहुत दूर है अभी. दिल्ली अभी दूर है. लेकिन I don't want to be pessimistic, optimistic, but with enlightenment. तो अगर enlightenment नहीं होगा तो खाली ऑप्टिमिज्म से फायदा नहीं. तो एनलाइटनमेंट होना जरूरी है. इसलिए ज्ञान, इसलिए एसोसिएशन, एवरीथिंग इज लिंक्ड. भक्ति इज सो ब्यूटीफुल. एक भी भक्ति का लिंब जो है वो दूसरे से अंग से अलग नहीं है. लेकिन इन सब का जो बेस है वो क्या है? नवड़ा भक्ति का सबका बेस क्या है? हाँ नहीं, उसका बेस क्या है? चैंटिंग द होली नेम. अगर वो नहीं हो रहा है और बाकी सब हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है. ये समझिए. नहीं आज मैंने 2 राउंड छोड़ दिया, 4 राउंड छोड़ दिया. हाँ मैंने सेवा करी ना. नहीं. Excuse me, Prabhu. I have a question. Yeah. It's not. Can we say this कि और कुछ हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा? You have served Krishna, it will have its effect. I feel like that. वो भी ठीक है. So pure, everything related to नहीं Krishna. वो भी अभी थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं. आई न्यू कि दिस विल कम. दैट इज गुड. It's not, I'm not saying that No, you're saying that the cost of mala. But No, I'll tell you.
वो भी जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है, ओके। लेकिन जो परंपरा हम फॉलो कर रहे हैं वो है महाप्रभु परंपरा. इट इज बेस्ड ऑन होली नेम. No, let me finish. तो if we do not, ठीक है, पर किसी कारणवश शरीर नहीं हो रहा तो एक माला छूट गया तो that is fine. अगर next day पूरा कर लो that's okay. No, I don't mean that. I'm not saying like if we are initiated, we have to do 16 rounds. We should do, right? We must do. But like one is just entering into the thing, into the process, then it starts his with seva or even kirtan or whatever related to Krishna, related to this, is pure. Everything related to Krishna is pure. So that will cleanse their mind and then they can start chanting, isn't it? No, that is also fine. That's also fine. That we can do that. Yeah, somebody gets at least attached to some seva. But until unless he or she chants holy name, because chanting of holy name is begging for seva. He cannot say, yaar, haan, maine beg kiya hai. Now he can do that to some extent, but his seva will not be based on the process which is recommended by Chaitanya Mahaprabhu. पर हम ये नहीं कह सकते कि it's nothing. No, it's nothing. When I say it's nothing means, see, the conclusion is given by 6 Goswamis. My slide, last slide, you will see, Jiva Goswami explains very clearly, okay, in his Sat Sandarbha, there is one sloka which says that every limb of devotional service is based on chanting and glorifying Lord's holy name. Yeah, because that is the Yug Dharma of this Kali Yuga. Because it's Mahaprabhu's following. Now there are other marg also where they don't chant Hare Krishna but they serve. No, you're missing the point, Prabhu. I'm not saying mala is the chanting is prime important, paramount, not denying. But when you say that if you're not doing chanting, but we are doing seva, we're doing this, of no use. That's where When I say no, it's not. नहीं, but देखिए, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में होली नेम पे जो स्ट्रेस है, नहीं, listen, you have to listen. वो everything is based on chanting the holy names of the Lord. Okay, deity worship पे stress नहीं, but deity worship is there. Deity worship is there. Prabhupada says, okay, but if you are not, again I am linking this to, but if you are chanting Hare Krishna and doing deity worship, perfect. But not you, but I'm just saying any XYZ, if they are not chanting the holy names of the Lord, okay, let's say they are chanting 2 rounds, that's fine, they are just offering, that is fine. But they will come to that point. I'm talking about people who want to advance further, they want to go further. So I would say even if you are serving a Vaishnava and you are still not doing rounds, you will start doing the rounds. That's how. But that intelligence to serve a Vaishnava will only come to him, okay, mostly if we chant the round. Otherwise it will not come. See, according to Karam Kandya, if I am a normal person, no Hare Krishna, nothing. If he is serving somebody needy, he gets so much of pious karma. Prabhu, that is Karam Kandya, Right? not talking No, about Karam, we're no. talking about Karam It is an Kandya. activity, Madhuri. It's an activity. He is helping a normal human being. Let's say a non-devotee is going in a road and he sees an accident. He immediately will come out and help the person who is distressed. Right? It is in nature. But in this day and age, the propensity, daya, is decreased. The mercy is decreased. That is a symptom of this day and age. Now, if you are a Vaishnava, not only you will serve a Vaishnava, but you will serve the whole human society. And again, now linking back to this Mahaprabhu's thing, what is the best service to humanity? Is to give them the holy name. So everything is linked to the holy name. I'm not disagreeing with you. I think I understand. She's saying that if somebody is serving is nothing, you don't say that. And you're saying that some people, if they don't want to chant 16 rounds and there's no idea to seva. That's what he meant. What I am saying is, People ask excuse that, oh,
I couldn't finish my 16 round, but I'm doing seva. That's what he was trying to say. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी माला अगर सेवा करता है मतलब मेरे तो कोई नहीं, मतलब नहीं, मेरा नहीं, ये मतलब है कि कोई भी सेवा अगर मैं हूँ ही नहीं, अगर सपोज मैं इस में प्रभुपाद के कांटेक्ट में अभी नहीं आई, राइट, मैं किसी इस्कॉन डिवोटी के ही कांटेक्ट में अभी नहीं आई, राइट, but he is talking about the devotee sit down and finding okay, if he means that, I think now, that's what I mean, Mataji, is this. This presentation is not when I say कि माला नहीं हो रही और बाकी सब हो रहा है. This is for people who have taken this vows, who are progressing further. उनके लिए कह रहा हूँ मैं. I'm like kids. They come, they do the Dandavat, they play bell, they do Aarti, they do nursing prayer. They are advancing. They are advancing. They are getting a gift. ऐसा नहीं कि अरे तूने 16 माला नहीं करी तू advance नहीं है. But this is for people who have taken the vow. Okay, so what I mean to say, in this similar context, once I asked this question to Maharaj that sometimes even though you're initiated, you may find due to some reason or some time constraint, you have to do like in the morning chanting and you have to do the deity worship. What is you recommend if you have the short of time for whatever reasons there? You say you get up 3 o'clock, 4 o'clock and do all the things before you go to office, but if you are not able to do for whatever reasons it is, then is doing the rounds is important or doing the aarti is important? Then his question answer was, doing the rounds is more important. You can leave aarti that way. You can do the aarti in short if you have time. Correct. If you cannot do in short, you can leave the aarti. That's fine. But the rounds. yes. And when in the Prabhupada's book also, I read somewhere is mentioned, if you see it's the 80-20 rule is there. 80% stress is on the chanting and 20% That on is what I'm devotion, saying. other things. So that is where the point is that you have to prioritize Yes. and see, put focus on Focus the on 80%. chant. It doesn't mean that you ignore the 20%, but if for some reasons you are not able to do, then focus on 80%. That is what I'm saying. Chanting is the basis of all the other. That is the limbs. युग That's धर्म it. of Kali to take Hare Rama. Chanting. तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर माला नहीं हो रही है और बाकी सब हो रहा है इसका मतलब. But उनका जो question, I think उनका जो question है, I'm not disagreeing with this. Everybody, Yeah. ISKCON में when somebody enters, like within a week, you understand that chanting is the most important thing. I'm not disagreeing here. That was my one only request. So like saying that seva or other things are, if you haven't done mala, other things are no need. Whatever word you use, I don't even remember. Anyways, I'm No sorry. problem. So when the burning effects of the fire of material existence is extinguished, the holy name starts to benedict the devotee with the cooling moon-like rays, which is Bhakti. So that we can check. Every living entity can check, am I getting devotion or not? Or I am pseudo-devotee, where I am trying to pretend to be devotee, but inside I am something else. That only we know. Nobody else, so Krishna knows. So like that, check and balance. And it's no harm to accept a shortcoming, because we all are short, we are imperfect. We are trying to become perfect. So if we do not identify those defects, then how will we fix the problem? Like if a CEO of the company doesn't identify the problem in the finance department, how will he fix it? There is a problem, but he ignores it. He knows there is a problem, but he ignores it. And thinking अपने आप fix हो जाएगा, optimistic, हाँ हो जाएगा सब ठीक. No, he has to be enlightened to fix it. So regarding this, there is a very nice pastime I want to discuss, and then I'll stop because then I'll take the next presentation. And by the way, this is only just one line of Shiksha-Ashtakam we have covered in 1 hour 15 minutes. Okay, so story of Mrigari. How many know you of Mrigari? Anybody knows? Okay. So if you have read Chaitanya Charitamrita, in Madhya Lila, Krishna is, Chaitanya Mahaprabhu is telling this to Sanatana Goswami. So Narad Muni, so Mrigari kya hai? Mrigari was a hunter. See his previous picture. He was a hunter.
and he used to hunt animals in the mountains. So Narad Muni is a Vaishnava, is a Param Vaishnava, so he travels from one universe to another. So he saw this hunter killing animals. And what this hunter was doing is so when Narad Muni came, he saw this hunter was killing a boar. So he had like 4 arrows struck on the legs of the boar. And the boar was crippled, walking like this. And very painful, very, very painful. And then Narad Muni went little ahead and he saw a pigeon struck with 5 arrows, 1 on the head, 2 on this wing, left wing, and 2 on the right wing. And the pigeon was almost crippled, but alive. Then he went further ahead and he saw that there was another animal, like a bull, with his half head cut off and 1 leg, 5 arrows pierced, and another leg half cut off, and bull was crippled. Again, very, very distressed condition. Then when Narad Muni saw, he took another step, he saw this hunter, Mrigari. So he asked him, so he said, he thought he was going to kill him. So the Narad Muni was a pure Vaishnava. So just by looking into the eyes of Narad Muni, he didn't kill Narad Muni, but he asked Narad Muni, why are you here, what do you want? So Narad Muni said, I have one question if you can answer. Why are you giving so much of pain to these animals? Half killed. And he said, because this is what I know. Hunter replied, this is what my father told me. And my father was a hunter, so I am also hunting, and this is how we hunt. And he said, but why? He said, because I get pleasure when I see these living entities in a distressed condition. So Narad Muni then pled with him, that if you want to kill them fully. Don't kill them halfway. So at least this much if you can hear. So he said, okay, I will do that. So by Narad Muni's purity, he at least took his instruction. Then later on, then he says, okay, if I kill them fully, how will I maintain myself? How will I maintain myself? Because I can, get a lot of people who will see this, and how will I maintain myself if I stop hunting? Or if I kill them fully? No, first he said, okay, kill them fully. Then he said, okay. Then he said, my other proposal is, what if you stop killing altogether? Then he said, but how will I maintain myself? Because right now I sell them, I sell their skin and everything. So he said, what if I arrange for your food? Then Mrigari says, yeah, that would be nice. Because why? Because he gave him little intelligence. Mrigari got little intelligence. So then he started thinking. So he said, okay, what should I do? He said, okay, go to this river, Ganga is flowing, called Godavari. Then you make your hut next to the river and plant a tulsi plant. And every day circumambulate the tulsi plant. And in Chaitanya Charitamrita very clearly written, Narad Muni tells him, chant Hare Krishna mantra. Mahaprabhu tells the story of Sanatana Goswami. This is chant Hare Krishna mantra. Very specifically he says. Then Mrigari says, okay. So Mrigari puts a dhoti on, shaves his beard, shaves his head, and starts chanting, and he and his wife. Then the news quickly spreads in the whole village that the hunter Mrigari became a Vaishnava. So when all these different people come to see a Vaishnava, they bring some food and something to drink, some atta, chini, dal, So Bhagavan ने उसका पूरा खाने का इंतजाम कर दिया. Because Vaishnava हो गया. So Yogakshem Vahamya. See that Yogakshem Krishna does. But we have that problem when we think, नहीं मैं करूँगा तो होगा. मैं उपार्जन करूँगा तब मिलेगा पैसा. तो इसके लिए थोड़ा सा फेथ कृष्ण को देना चाहिए. अगर आप
Yes, I'll tell you one story, okay? I'll stop here because I have a lot to talk, Maharaj says, but I'll stop only on the... No, I didn't stop you. I'm Yeah, looking at you all the time. because offering is being Offering is going. doing also. So I'm just relating this to a story recently. So one of my known acquaintance, I won't name it, but had a lot of problem with green card, okay, and H1 and everything. And a lot of planning. He spent almost $50,000 on his H1 and green card. $50,000. And when I heard it, I was very, and he's just started to become a devotee. He's a person and congregation member in Denver. So he said, so he was doing H1 with one company. Then he had his wife also do a MS just because she can get a job in case if his H1 get denied. So like a Hiranyakashipu, I will not die in the night, I will not die in the morning, I will not die here, I will not die outside, I will not die inside, I will not die with any astra shastra, neither up nor down, right? All sorts of permutation combination he is trying to do. So he said, okay, I'll get my wife to do MS, then at least if my visa goes south, hers will get approved. So she will be fine. Okay, he does that. So then he wants more money in between, Davagni. In this whole problem, he wants more money. So he wants a more billing rate. So he said, okay, I will now change the job, then I will change my wife's visa also. And then parallelly, I'm going to file a green card, so let me do 2 LCS. One for my wife, one for this. And I said, and he's paying, so he's about money to attorney. I said, Prabhu, let something depend on Krishna. Okay, now you have done this, let's wait what the result is. And if the result is you have to pack bags and go home, so it be. Who cares at that time? I said, aapne kar liya na jitna karna tha, but now don't spend any more money. So that is Migra. So optimism, but no enlightenment, no intelligence. So that is what I am trying to say. So Migrari had that in him, he listened to a Vaishnava. And he took that instruction as his life and soul. And Krishna arranged through his devotees lot of prasadam for him every day. Then he started getting so much, he said, please don't bring this so much. Then what happened? Yukta ahara vihara. He said, no, I got so much, I want to eat less. Maharaj said, less. No prasadam, less. Prasadam is required, of course, but for us, we are advancing, we should eat less, simple. I like sweet, I want to cut down sweet. That's one thing I'm not able to do, deficiency. I had to cut it. One day I had. So that way. So, yukta ahara vihara. So, in taking the instruction, getting the benediction, getting intelligence, serving the Vani, meditating on serving the Vani, trying to do everything, trying to connect to Krishna, means altogether progress. So, I'll just stop here. Please forgive me for anything, Mataji, if I have said anything offensively. Thank you very much.